Good evening, children. Let's come to today's topic of SAT, that is consumer rights. See, the word consumer rights here is related to that so many things are there in the marketplace. So many things are there in the marketplace, and according to the demands of the customers, that market is totally maintained. So today we are going to study about the chapter the consumer rights. Now, children, let's firstly talk about what is the consumer in the marketplace. What is the consumer, or what is the importance of the consumer in the marketplace? Both producers and consumers participate in the market. The producers participate by working in any of the sector to produce goods and services, while the consumers participate by buying goods and services from the market. सीधा सा मतलब है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कई चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कई सारे सेक्टर्स में, और वो मार्केट में अपने गुड्स को एंड देयर सर्विसेज वो मार्केट में प्रोवाइड करते हैं. एंड वी जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, हम लोग सभी लोग, ऑल द पीपल, दे पार्टिसिपेट इन बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज. हम लोग बाज़ार से चीज़ें खरीदते हैं और बाज़ार में जो जो सुविधाएं होती हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं. The final goods are the goods that the people consume. Final goods क्या होते हैं? The final goods are the goods that the people consume. Now the second point is customers are exploited in the market by a number of ways. Customers are exploited in the market by a number of ways. कई सारे तरीके होते हैं जिससे कस्टमर्स जो होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है या उनको मूर्ख बनाया जाता है. थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. फर्स्ट पॉइंट इज थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और selling of adulterated, defective goods, etc. The sellers try to shift the responsibility on the buyer in case of any complaint. सीधा वो उस पर कस्टमर जो थे, आपने जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कोई दवाई खरीदी, आप मार्केट में गए, आप मार्केट से दवाई खरीद के ले आए और घर में आके देखा तो वो एक्सपायर हो चुकी है. आपने वो दवाई खा ली, उसके बाद उसका साइड इफ़ेक्ट आपको हुआ, तो आपने दोबारा देखा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी, एक्सपायरी देखी, और दोबारा से आप शॉपकीपर पे जाते हो, मेडिकल शॉप पे आप गए, तो वो सीधा आप पे ब्लेम कर देगा कि आपने ये देखा क्यों नहीं. सो इन दिस मैनर दीज ऑल मेथड्स आर देयर. So customers are exploited in the market by a number of ways, through unfair trade practices or selling of adulterated, defective goods, etc. The sellers try to shift the responsibility on the buyer in case of any complaint. Means directly or indirectly, the producers make the customer only responsible in relation to any complaint. Okay. Markets do not work in a fair market. The most important point. Markets do not work in a fair manner. The producers tend to be more powerful. The producers tend to be more powerful even when they are few in numbers, while the consumers purchase in a small amount and are scattered. देखो, जितने भी दुकानदार होते हैं, दुकानदार कम होते हैं और खरीदार ज़्यादा होते हैं, लेकिन जितने भी दुकानदार होते हैं वो सब मिले जुले रहते हैं, उनकी यूनिटी बहुत मजबूत होती है. ऑन द अदर साइड, इफ़ आई टॉक अबाउट द कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स, हम लोग बहुत एरियाज को बिलोंग करते हैं, बट वी पीपल आर नॉट हैविंग द यूनिफिकेशन. द बिग कंपनीज with huge wealth and power can manipulate market in a number of ways. They spread false information through media and other sources to attract customers. इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है
whether you are having Bonvita, Complan, Horlicks, Boost, any kind of ingredient. But all the stars, they do the advertisement of that. And what they try to prove that this product is the best. And what the children do, they prefer only those products. If Virat Kohli or Mahendra Singh Dhoni, any of the sports star or actors are doing the advertisement of any product, the children prefer to purchase those products only. आप लोग को याद हो कि पहले छोटा भीम और मास्क वगैरह ये लोग कंपनीज निकालती थी, जैसे आप ये हॉर्लिक्स खरीदते हो या कुछ खरीदते हो तो वो आपको वो ऑफर मिलता था. So why that? It was so that the children may be attracted. Children should be attracted towards their product. That was their target. Okay. But overall, there is a need for rules and regulations. कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए for the protection of consumers in the marketplace. There are organizations which ensure that the rules are followed. Now let's move to the next point, consumer movement. Now my topic is consumer movement. Now let's talk about the consumer movement. If I talk about the consumer movement, it was presumed that the consumers were responsible. It was presumed that the consumers or customers were responsible for the commodity or service they buy. The consumer movement as a social force originated in 1960s to promote and protect consumers against unethical and unfair trade practices. Till 1970s, the consumers organization wrote articles and held exhibitions. They also formed consumer groups to look into the malpractices in ration shops, overcrowding in the road passenger transport, etc. Recently, India has seen an increase in the number of consumer groups. With their effort, the business firms as well as the government was pressurized to correct their business conduct, which was against the interest of consumers. I will just quote an example. You all would have traveled in railways. रेलवेज में जो हम लोग का रिजर्वेशन के कंपार्टमेंट्स होते हैं, जितने सीट्स होती हैं और उसमें जो पैसेंजर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट. भाई 80 सीट्स हैं, 80 सीट्स के लिए एक डब्बे में होती हैं और उसमें जो पैसेंजर्स होते हैं वो 120 हो जाते हैं, 140 हो जाते हैं. सो इन रिलेशन टू दैट, so all these things, they are in relation to the misuse. In 1985, United Nations adopted the UN guidelines. In 1985, United Nations adopted the guidelines for consumer protection. This was a tool to protect consumers and for consumer advocacy groups to press their government to do so. This became the foundation for consumer movement at the international level. In 2015, the UN General Assembly adopted the revised UN guidelines for consumer protections. Short question हो सकता है, in which year the UN General Assembly adopted the revised UN guidelines for consumer protection? That would be 2015. The Consumer Protection Act, CPA, the Consumer Protection Act 1986 was enacted by the Indian government in its
and it is popularly known as COPRA, COPRA. The Consumer Protection Act 1986 was enacted by the Indian government and it is popularly known as COPRA. Now the next point. Now children, let's talk about certain consumer rights. Consumer rights होते क्या क्या हैं? कौन से होते हैं? Let's talk about that. Consumer rights. See, we people go to the shops, हम लोग दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, but there are certain rights the government has made for the customers or the consumers to protect themselves. For example, total there are 6. The first one is right to safety, right to be informed, right to choose, right to seek redressal, right to consumer education, and right to be heard. These are the 6 fundamental rights. Now let's talk about this. What do you mean by right to safety? क्या मतलब होता है इसका? Firstly, consumers have the right to be protected against marketing of goods and delivery of services that are hazardous to life and property. Safety rules and regulations must be followed by the producers. जो भी चीज़ को बनाता है ये उसकी जिम्मेदारी है सेफ्टी को मेंटेन रखने की, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की. Bad quality goods are found in the market due to weak supervision of the rules. देखो कई बार क्या होता है जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत बेकार क्वालिटी के होते हैं. एंड व्हाट इज द रीज़न? क्योंकि उनका सुपरविजन जो ऑफिशियल्स हैं जो उसको सुपरवाइज करते हैं they are not able to supervise it in an efficient manner. So that's why several products are there which are of bad quality and they are found in the market. Especially now the festival season is coming, so we will see in the sweet shops or in the other areas, refined and all other things, there will get a very poor quality of products. Now after 10-15 days we will start reading in the newspaper also 10 days or 7 days that these many shops have been found selling wrong sweets or mixed sweets like that. Now my second point is right to be informed. Now what does it mean? See, consumers have the right to be informed about particulars of goods and services and to have access to accurate facts and information needed to make informed choices and decisions. Producers must inform the consumers of change in the price if any. अगर कोई दाम में बढ़ोतरी हो रही है, घट रहा है, तो वो कस्टमर्स को पता होना चाहिए. In October 2005, the government of India enacted a law popularly known as the RTI. RTI, what is this? This is right to information. ये जो हमारा right है जो 2005 में ऐड किया गया था, it is RTI, which ensures its citizens all the information about the functions of government departments. जैसे कि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में कुछ एरर आ रही है, कोई फ्लाईओवर टूट जाता है, ब्रिज टूट जाता है, किसी की क्वालिफिकेशन आपको जाननी है, एनी सच काइंड ऑफ थिंग, तो अकॉर्डिंग टू द RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत यू कैन गेट द इंफॉर्मेशंस. आपको उसके बारे में जानकारी मिल सकती है. प्रोडक्ट कौन बनाता है, इस गवर्नमेंट किसकी है, ये डिपार्टमेंट का हेड कौन है, क्या क्या काम है, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन. Now, the third point, the third consumer right is right to choose. Right to choose में, now what is this right to choose? Consumers have the right to have the right to be chosen, have the right to choose from a variety of goods and services. Any consumer who receives a service in whatever capacity
regardless of age, gender, and nature of service, has the right to choose whether to continue to receive the service. देखिए, हमारे पास राइट होता है, जैसे आप कोई भी दवाई खाते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, आपके पास राइट है। आप उसके सर्विसेज को कंटिन्यू करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं, डिपेंड्स टोटली ऑन यू। सो जैसे एंड यू आर हैविंग द राइट टू कैंसिल इट ऑल्सो। जैसे आप कोई ऑर्डर देते हैं एंड इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन कैंसिल इट ऑल्सो। द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू सीक redressal. Consumers have the right to seek redressal against unfair trade practices and exploitation. The consumer has the right to get compensation against any damage. For example, आप कुछ मार्केट से खरीद के लाते हैं और वो प्रोडक्ट खराब निकल जाता है, उसमें एरर निकल जाती है, देन आप RTI के थ्रू कंज्यूमर फोरम में जाके you will get a good compensation against the damage which have been caused by that product. Next point is right to consumer education. Consumers have the right to have education on matters regarding consumer protection as well as about consumer rights and to have knowledge about product and quality standards. My next point is right to be heard. See, consumers have the right to be heard or right to advocate his/her interest and to be assured that his/her interests will receive due consideration at appropriate forums. Under this right, the companies must have complaint cells to attend the complaints of customers. You would have seen हर प्रोडक्ट का, हर कंपनी का एक नंबर होता है, that is toll free number. If you are having any complaint related to that, if you are having any problem related to that, you can dial the toll free number. और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, whatever complaint you are having, you can put up the case. आप उसमें जानकारी ले सकते हैं. See children, the consumer movement in India has led to formation of consumer forums. अब क्या है इसका बेनिफिट क्या हुआ? अब consumer forums बन गई. They guide consumers on how to file cases in the consumer court. अब जो कंज्यूमर फोरम्स होती हैं वो पब्लिक को हेल्प करती हैं, पब्लिक को जानकारी प्रोवाइड कराती हैं कि किस तरह कंज्यूमर कोर्ट में आप अपने केस को फाइल कर सकते हैं. दे मे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन द कोर्ट. और कई बार क्या होता है, जो इंडिविजुअल जो कंज्यूमर्स होते हैं, एक एक लोग भी, वो लोग भी कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं. These organizations receive financial support from the government. और जो organizations होती हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है. So these facilities are being provided by the government. और इसमें होता क्या है, स्पेशली जब सेल वगैरह लगती है, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में क्या है, तो उस समय जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो ख़त्म होने की कगार पे, मतलब दे आर नॉट इन डिमांड, तो उस पर वो लोग ऑफर्स अपग्रेड कर देते हैं. 80% ऑफ, 85%, 40% लाइक दिस. व्हाई? बिकॉज दोज प्रोडक्ट्स आर नॉट इन द मार्केट. Okay, one more point I would like to revise, that is right to seek redressal. See children, जितने भी consumers होते हैं, consumers have the right to seek redressal against unfair trade practices and exploitation. The consumer has the right to get compensation against any damage. मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं
आप कोई रिफाइंड ऑयल लेके आते हैं, उसमें प्रोडक्ट में मेंशन ये किया गया ये चीज़ें हैं, बट जब उसका यूज़ होता है तो पता चलता है इट इज़ समथिंग एल्स। तो इन दैट केस यू कैन मूव टू द कंज्यूमर फोरम कि आप लाए तो ये प्रोडक्ट थे लेकिन निकला ये प्रोडक्ट। खास करके जो हम लोग के ऑनलाइन शॉपिंग्स होती हैं उसमें बहुत बार होता है कि आपने ऑर्डर दिया था कुछ और निकला कुछ और। तो अंडर दैट कंडीशंस यू कैन मूव टू द कंज्यूमर फोरम। इस कंडीशंस में आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, अंडर दीज कंडीशंस ओनली। Now, the next point is, now let's talk about three-tier quasi-judicial machinery. The topic is three-tier quasi-judicial machinery. District Consumer Disputes Redressal Forum. This is the first point. सेकेंड है हमारा स्टेट कंज्यूमर। देखो टोटल 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी होती है। 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी होती है जो अपने वर्क्स को लेआउट करती है। पहला जो फर्स्ट विंग होती है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम। इसकी ड्यूटी क्या होती है? इन दिस केसेस इन्वॉल्विंग, अब इसमें किस टाइप के केसेस आते हैं? केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स अप टू 20 लाख, 20 लाख तक के जो क्लेम्स होते हैं वो दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम। माय सेकंड पॉइंट इज स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। ये होता है केसेस इन्वॉल्विंग, इसमें कौन से केसेस आते हैं? केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स बिटवीन 20 लाख एंड 1 करोड़, 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो क्लेम्स होते हैं वो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के पास जाते हैं। और जो थर्ड होता है हमारा दैट इज नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। इसमें होते हैं वो केसेस जो कि विच आर हायर देन 1 करोड़, जो 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम के केसेस होते हैं वो हमारे जाते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। नाम याद रखना, 3 क्वासी जुडिशियल मशीनरीज होती हैं। पहली होती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम, सेकंड वन इज द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन एंड द थर्ड वन इज नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। टोटल ये 3 होती हैं। Now let's talk about the next topic. My next topic is well-informed consumers. The next point is well-informed consumers. देखिए इसमें nearly we will study about 2 points. See, the first point is the consumers will be able to discriminate and make informed choices only if they become aware of their rights. My next point is the enactment of COPRA has led to setting up of separate departments of consumer affairs in the central and state government. Now, the next point, ISI and EGMARK. EGMARK means AGMARK. ISI और EGMARK ये क्या चीज़ें होती हैं? देखो जब भी आप शॉप पे जाते हो, कोई भी आप खरीदारी करते हैं तो आप इसमें देखते हैं कि यार ये ISI मार्क है कि नहीं, मतलब ये गवर्नमेंट से रेप्यूटेटेड है कि नहीं, क्वालिटी वाइज चेक्ड है कि नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं ISI एंड EGMARK। हम लोग बात करते हैं ISI की। देखो हर प्रोडक्ट पे लोगो लगे होते हैं, ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विल फाइंड द लोगोज और सर्टिफिकेशंस
such as egg mark, hallmark, ISI help the consumers in assuring the quality of the product purchased by them. These organizations allow the producers to use their logo only when the producers comply to their quality standards. इसका सीधा मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसकी क्वालिटी मेंटेन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सर्टिफाइड है तभी उस पर वो ट्रेडमार्क यूज़ करेगा. जब भी हम लोग लेने जाते हैं या आप लोहा खरीदते हैं एनीथिंग तो वो आईएसआई है कि नहीं, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि दैट हैज़ बीन checked by the government or not. It is not compulsory for all the producers. जितने भी producers होते हैं ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं होता है to follow standards. However, it is mandatory for producers to get the certification in case of products that affect health and safety of consumers such as LPG cylinders, food colors, etc. So these are the points. Now children, let's move to the next point. देखो अगले अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. टेकिंग द कंज्यूमर. Okay, my point is taking the consumer movement forward. थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पे. taking the consumer movement forward क्या चीज़ होती है. सी चलो जो 24 दिसंबर होता है, 24 दिसंबर is observed as National Consumers Day in India. Remember the date? 24 December is observed as National Consumers Day in India. It was on this day that the Indian Parliament, it was on this day that the Indian Parliament enacted the Consumer Protection Act 1986. India is one of the countries, भारत उन देशों में से है that has exclusive courts for consumers redressal. मतलब कंज्यूमर्स के लिए ही सिर्फ कोर्ट बने हुए हैं भारत में कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है कुछ भी है तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है. The consumer redressal process has become cumbersome, expensive and time consuming. It also becomes difficult to gather evidences. The existing laws are not very clear on the issue of compensation to the consumers injured by defective products. The third point for this is consumer awareness in India. Consumer awareness in India is spreading slowly. धीरे धीरे हमारे देश में फैल रही है कंज्यूमर अवेयरनेस. मतलब जो कस्टमर्स हैं, जनता को जागरूक होना पड़ेगा. जो हम लोग हर चीज़ का जो इस्तेमाल करते हैं हमें जागरूकता चाहिए दैट वी शुड बी नोइंग आवर प्रोडक्ट वो सही है गलत है. वी शुड बी हैविंग द नॉलेज टू जज दैट. Enforcement of laws that protect workers is unorganized sector. In unorganized sector is weak. Rules and regulations for working of markets are often not followed. See, जो consumer movements होते हैं, consumer movements can be effective only with the consumers active involvement. अगर हमारे consumers actively involve होते हैं किसी चीज़ में तभी ये consumer active या consumer movement successful हो पाएगा, effective हो पाएगा. It requires voluntary effort and struggle involving participation of one and all.
Just for example, I would like to say, I'm just talking of a very small thing. We people, you should be sending me your answer, yes or no. आप लोग शॉप्स पे जाते हैं, स्टेशनरी शॉप्स पे जाते हैं, कॉपी किताब की दुकानों पे, आप पेन खरीदते हैं, रजिस्टर खरीदते हैं, स्केच पेन, वॉट एवर यू परचेज. हैव यू एवर टेकन द रिसिप्ट ऑफ दैट? रिस्पॉन्ड मी. हैव यू एवर टेकन the receipt? Yes, children, respond. Misty, Priya, Shlok, Pratyush, Sujal, Satyendra, Janvi, Anirudh. Just tell me, children. Send your answer fast. Have you ever, do you collect okay, children? Now, it's the time for MCQ. Now, let's move towards the MCQ. My question is, first question, for which of the following products, for which of the following products the quality check ICI and egg mark is compulsory under government rules? Options are, first one, LPG cylinders, jewelry, food colors and additives, and fourth one is cement. Just send your answers fast, children. Children, respond fast. Now I'm coming to the answer of this question. Nobody is responding. It means that nobody is aware of. See, the answer, the question is, for which of the following products the quality check ISI and egg mark is compulsory under government rules? LPG cylinder, jewelry, food colors and additives, and cement. So for this question, the right answer is option 4. Option 4 means first, third and fourth. Now I tell you the reason also. The products that affect health and safety,
the products that affect health and safety of consumers or of products packaged drinking water, it is mandatory on the part of producers to get certified by ISI and EGMA. Jewelry is not mandatory, certified by the producer. Means all the eatables, LPG, water, जितनी चीज़ें होती हैं, all of them should be ratified because they are related to health and safety of the consumers. Now let's move to the second question. My second question is, why do the consumers go to consumer courts? Option A, to exercise their rights as consumers. Option 2, to get a fair deal from sellers. Option 3, to make a complaint regarding a good or service. And option 4, all of the above. Yes, children, my voice is Shlok, Pratyush, Sujal, anyone of you tell me, my voice is audible or not, because nobody is responding. Okay, the answer for this question, question number 2 is, why do consumers go to consumer courts? The answer for this question is option 4. Option 4 is all of the above. It means that whenever a consumer is cheated by the producer, he/she can make a complaint regarding the producer. The court, after checking the evidences, provide the consumers with compensation or replacement. This way, the consumers are able to exercise their rights. Now let's move to the third question. My third question is, who among the following are the participants in the market? Options are consumers, producers, government, consumer courts. What's the answer for this? Let's come to the answer. The answer for this question is option 1. It means the consumers and producers are the participants in the market. The consumers and producers are the participants in the market. The producers participate by working in any of the sectors, while the consumers participate by purchasing goods and services. Now let's move to the fourth question. Fourth question is, which of the following do not require any rules and regulations? Protection of workers in organized sector, protection from high interest rates, making a shopping list, protecting the environment.
Okay, by this only, it's a easy question, you all can understand that option 3 would be the correct. Third option is the correct answer. Why? Because we do not require any rules and regulations while making a shopping list. जैसे आप बाजार जा रहे हैं, आपको क्या क्या खरीदना है, आप जो चाहे वो लिस्ट बना ले, उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं होती, गवर्नमेंट से कोई रेटिफिकेशन नहीं कराना होता है आपको. However, rules and regulations are required to promote development in the country. Now the next question. The next question is, whenever there is a complaint regarding goods or services, the seller tries to shift all the responsibility on the buyer, government, rules and regulations, or laws in the country. Okay, children. So it is also an easy question. See, the answer for this question also is option 1. Why? Because the seller tries to shift all the responsibilities on the shoulders of the buyers. When a buyer complains about the goods and services, the seller feels he has no responsibility once a sale is completed. हमने अपना सामान बेच दिया, अब हमें कोई मतलब नहीं है खरीदने वाले को क्या हुआ, चीज़ खराब निकली, अच्छी निकली. We are not concerned with that. Now children, let's move to the last question of today. The last question for today is, which of the following is a fair trade practice? Which of the following is a fair trade practice? Option A, weighing goods using unstandardized weights. Option 2, adding charges which are not mentioned before. Option 3, selling adulterated or defective goods. And the fourth option is providing a bill at the end of transaction. Question is, which of the following is a fair trade practice? So now the answer for this question is option D, providing a bill at the end of the transaction. मतलब हमने जो भी खरीदारी करी है, अंत में हमें उसका बिल मिल जाता है, हमें उसकी रिसिप्ट मिलती है, बिल मिलती है, जिससे कि we are having an evidence that I have purchased the product from that shop only, कि हमने उस प्रोडक्ट को वहीं से खरीदा है और ये इसी दुकान का प्रोडक्ट है. So that is a very important point. Fair trade practice is a very crucial point. So now children, that's all for today. Just go through the topics, that is